And last, I would like to invite Mr. Rakesh Prasad on the dais. Mr. Rakesh Prasad works as AVP HR with Indigo. He head human resources for the in-flight department and lead diversity and inclusion. We have with us Ms. Geet as well. She is India's first actress in a wheelchair and makes short films on socially relevant topics such as women's rights, domestic violence, child abuse, and disability awareness. She is a dynamic motivational speaker who has spoken internationally to crowds of all sizes, from government officials to business professionals. Glad to have you all in this session. Over to you, Aradhana ma'am. I think COVID has taught us all to keep asking, am I visible, am I audible? Because this has become a part of our lives. Thank you so much. आपने हमें बुलाया और यहाँ पर this is both a privilege and a pleasure to be here. I have some wonderful people on the panel and I'm looking forward to speaking to all of them. I think a lot of panel discussions. I think this is the last panel and all of you must have had, you must be tired of listening to speakers by now. पर बहुत सारे figures और facts आपको बताए गए होंगे और बहुत सारी policy के बारे में बातें की गई होंगी. पर मुझे लगता है ये जो panel है, this particular session that we are having about media, this is beyond the facts and the figures, and this is more about the lived reality. This is about our narratives, हमारी कहानियाँ जो हमें शायद दिखती नहीं है, कई बार सुनती भी नहीं है, पर बहुत ज़रूरी है कि हम सब ये सुने और देखें और किस तरह से दिखाई जाए और किस तरह से बताई जाए, ये भी बहुत अहम है. आज मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि कई बार मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों के अंदर डिसेबिलिटी दिखाई जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाई जाती, पर एक बहुत अजीब सी बात है कि एक मेन स्ट्रीम एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर इतना पैसा खर्चा जाता है उसके मेकअप पे, उसके कॉस्ट्यूम पे, उसके सारी वो लुक बनाने के लिए. तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कभी कि हम एक ऐसे शख्स को उस रोल को अदा करने के लिए सिखाएं और केवल सिर्फ हमें उसको एक्टिंग सिखानी पड़े शायद, क्योंकि बाकी सब वो चीज़ें तो उसके पास ऑलरेडी है. तो आज आकर मुझे यही लगता है कि जो हमारी सोच है उससे हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं और इसलिए मैं अब शायद अपने क्वेश्चंस सबसे पूछती हूँ. आपने इंट्रोड्यूस कर दिया ना सबको, डू आई नीड टू इंट्रोड्यूस एनीवन? आई थिंक दे हैव बीन इंट्रोड्यूस. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज how media can ensure better disability representation. So आप साथ में आशीष, तो आपसे शुरू करते हैं. Thank you, Aradhana ma'am, for setting the context. I think if we talk about how media reports on any issue, what we see right now is, there is a lot of emphasis, there is a lot of focus. बहुत ज़्यादा एक urgent stories break करने का, glamorous stories break करने का, वो उस पे बहुत ज़्यादा focus है. कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें डिसेबिलिटी इश्यूज़ पे बात करने का, तो उतना फोकस नहीं आ पा रहा है मीडिया का इन इश्यूज़ पे, क्योंकि अगेन बहुत सारी इसमें वो अर्जेंसी नहीं स्टोरी टेलिंग में उनको दिख रही है. दैट अर्जेंसी दे आर नॉट सीइंग.
तक हम क्या करते हैं कि हम सब चीज़ टीआरपी और आईबॉल्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसका तो ऑडियंस ही नहीं है, हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। एक और मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है कि यार इतना दुख है लाइफ में, क्या या थोड़ी देर देखना है, या वो भी क्या दुखी देखना है क्या। तो ये जो एक सोच है राकेश जी की डिसेबिलिटी दुख के साथ जुड़ी हुई है, इसको मीडिया कैसे बदल सकता है? आपको मैं माइक दूँ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, और इसी पे मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? ये सिर्फ चेक करने के लिए कि सब जगह है कि नहीं। ओके, एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ। एक सिनेमा था 2005 में जो रिलीज़ हुआ था यूएस पे, वो सिनेमा का नाम था मडबॉल। और मडबॉल मूवी में यूएस और कैनेडियन रग्बी प्लेयर्स के बारे में बताया गया था। वो मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ जो बहुत ही प्रेडोमिनेंट रूप से समझ में आया कि बहुत सारे मूवी मैंने दिव्यांजन पे देखी थी, पर उस मूवी पे दिव्यांजन को हाईलाइट नहीं किया गया है। उस मूवी में हर वो दूसरा इंसान किस तरह से गेम खेलता है उसको हाईलाइट किया गया है। और जब उस गेम के बारे में, गेम के डायनामिक्स के बारे में, उन गेम के लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में उस मूवी में हाईलाइट किया गया, तो कहीं ना कहीं वो दिव्यांजन का जो एस्पेक्ट था वो पीछे चला गया। और क्या सामने उभर के आया है कि मेरा कॉम्पिटेंसी क्या है, मेरा स्किल क्या है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया में मूवी बना था, जो तारे ज़मीं पे, वो ये दर्शाया कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का स्किल, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी डिफरेंट होती है, और उस चीज़ को हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उस इंसान के भले के लिए और एम्प्लॉयर्स का बेनिफिट के लिए। आई थिंक जब तक ये प्रेडोमिनेंटली निकल कर नहीं आएगा किसी भी तरीके से, चाहे मीडिया से, चाहे हम लोगों से, इस तरह की बातें नहीं होंगी, तब तक जो लोग दिव्यांजन हैं उनमें खुद में वो जो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका खुद का जो कैपेबिलिटी, जब तक वो नहीं समझ पाएंगे, ये सब देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि हम भी कैपेबल है हर वो दूसरे इंसान की तरह। तो आई थिंक ये एक एस्पेक्ट जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा रूप से या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में आई थिंक अगर आएगा तो लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और एक चीज़, आज का ज़माना है स्टोरी टेलिंग का। हमारे देश में जितने लोग हैं उसमें आई थिंक मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो यूथ का है, और यूथ सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग में किस तरह से हम जो बाकी हीरोइक इवेंट्स को दिखाते हैं और पीडब्ल्यूडी या दिव्यांजन को एक्सक्लूसिव ना रख के उस हीरोइक इवेंट्स में पीडब्ल्यूडी की आत्मकथा या पीडब्ल्यूडी की स्टोरीज को इंक्लूड करे, तो वो इंक्लूसिविटी को तवज्जो दिया जाएगा। और जब तक इंक्लूसिविटी की बात ना हो, जब तक लोग सेंसिटाइज ना हो, अवेयरनेस शुरू ना हो इंक्लूसिविटी के बारे में, तब तक लोगों में भी वो हिम्मत नहीं आएगी कि मैं भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। क्योंकि आज के तारीख में जब हम दिव्यांजन के साथ काम करते हैं तो उनका एक ही चीज़ होता है कि क्या मैं एबल हूँ, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। इसी वजह से बहुत लोग आगे ही नहीं आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो जब समाज में इस तरह की बातें होंगी, इस तरह के मूवीज़ बनेगी, इस तरह का चर्चा होगा, हम लोगों में अवेयरनेस आएगी, चाहे किसी भी माध्यम से, तब जाके ये चीज़ और ज़्यादा जोर पकड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू राकेश। आपने सॉरी, मैंने ऑन की जगह ऑफ कर दिया, आई एम सो सॉरी। तो राकेश, थैंक यू सो मच। आपसे 2-3 बातें जो मैं टेक अवे करती हूँ। एक तो ये कि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं कि ये जेंडर की बात है, ये गरीबी की बात है, ये डिसेबिलिटी की बात है, नहीं, ये सब एक चैलेंजेस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैं, और उनको कैसे काउंटर करना है, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। दूसरी बात जो हो गई है कि आज की डेट में हम सब फिल्म मेकर हैं, है ना, हम सब कहानियाँ बना सकते हैं और हम सब कहानियाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अब ये है, ज़्यादातर सब लोगों के हाथ में ये है। तो गुंजन, आपसे मैं ये एक बात ज़रूर पूछूंगी कि
जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, हम आसपास देखते हैं, हम सीखते हैं, हमारे जो रोल मॉडल्स होते हैं या जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, दैट्स हाउ वी डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू बी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ. पर जब हम डिफरेंटली एबल्ड को देखेंगे ही नहीं, जब उनके बारे में हम उनको एक मार्जिन पे ही रखेंगे, तो कैसे हमारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो सोचेंगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ बन सकते हैं, उनको कोई ऐसे रोल मॉडल्स दिखेंगे जिनसे वो अपने आप को उनमें देख सकेंगे. ये प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पे बात करें. सो आई फील डेफिनेटली, आई मीन इट गोज़ विदाउट सेइंग कि मीडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है, विच आई डोंट थिंक सो वी आर डूइंग अप टू द मार्क ऑफ विच वी शुड बी डूइंग. पहले I would want to talk about that why are we not doing enough what we should be doing, and I think जो हमारा मीडिया में अभी फ़िलहाल एक ट्रेंड है, and considering I come straight from the newsroom, so this token sensitivity that we have towards people with disability, that International Day of Disability है, let's do a package, let's do a full page story, and then let's forget it for the rest of the year. This is something, I mean, we celebrated International Day of Disability in December only, and this was the role that abhi tak kisi ko yaad nahi tha, and tomorrow it is International Day of Disability, and they're like, we need kuch karna hai, we need to put out those stories. Suddenly there is demand for those stories, and those stories are produced within a day, and there's a big spread, and there's the number of views, and it is done. So I feel कि जो हमारा token sensitivity है, which is due to multiple issues, there are lack of resources, breaking news का pressure है, TRPs, with whatever, but I feel as a team leader in the newsroom, I feel that if you create good content, you will always find TRP for it. So if you create good content which touches the heart of people, we will always find people, we will always find audience for it, readers for it. So one thing is that we need to move away from the token sensitivity that we show towards disabled people. Another thing I feel is that whenever we talk about storytelling about people with disabilities, I think we give too much value and too much focus on heroic stories rather than struggle stories. I'll give you an example that, a very basic example, when somebody from the category makes it big. Like, for example, when even the board results come out, we give special coverage to somebody who has wonderfully scored despite being wheelchair bound, despite struggling with some disability. But we completely ignore that there would have been so many others who would have faced certain struggles. They would not have got scribes, or the schools would not have particular facilities or focus, which would have also made them a perfect candidate for that heroic nature. So I think more stories on struggle, though definitely heroic stories inspire people, and they bring a lot of confidence कि इन्होंने किया है आप भी कर सकते हैं ऐसा, they bring a lot of that confidence. But I think that step motherly treatment towards those struggle stories is something that we really need to work on, and we really need to improve on. Thank you, Gunjan, so much for your insights and coming straight from the newsroom. It's also Christmas Eve, तो आप सबका भी बहुत big thank you कि आप अभी तक यहाँ पर हैं. और अब मैं आऊँगी गीत पे. गीत, I would like to specifically come to you about one point when we are talking of media representation, because आपने हर stereotype तोड़ा है, हर तरह का स्टेरियोटाइप अपने अपनी लाइफ से तोड़ा है. तो ये जो मीडिया में स्टेरियोटाइप सब टाइम डिसेबिलिटी को लेके दिखाए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? As a child, when you were seeing these images, when you were hearing these narratives in the media, what was your reaction? Hello? Okay, अब आ रही है आवाज़, right? Okay, sorry. As I was growing up, मैं 10 साल की थी जब मेरा accident हुआ और मैं wheelchair में आ गई, and there were just certain stories. Either you would see कि जो भी disabled है वो बहुत बेचारा है,
या you would see कि वो बहुत ज़्यादा कोई बहुत बहुत inspirational है, या फिर उनके बारे में मजाक उड़ाया जाता था. There was no one who was just normal and living a normal life and doing normal things. And you know, that I think is what we need, is more than showing कि जो disabled लोग हैं वो बहुत बेचारे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, या just showing कि वो बहुत ही inspirational हैं, वो बहुत ही achieve कर रहे हैं despite all the odds, या making them the butt of the joke. If we can just show that they're normal people, because that's what all of us want. We just want to be treated normal, right? हम चाहते हैं कि हम भी society में सबकी तरह जिएं. जैसे अभी बताया गया था कि तारे ज़मीन पर मूवी में दिखाया गया कि सबके अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, सब लोग अपने तरीके से डिसेबल्ड हैं. There's inabilities in everyone, right? तो अगर हम ये फोकस कर सकें कि जो डिसेबल्ड हैं वो सब कुछ कर सकते हैं बस अपने तरीके से, and if we can just show them in normal light in media, that would be great. Like जब हम movies बनाते हैं, you don't see, like it's always a character that's specially written for the disabled person. क्यों ना, बहुत सारे actors हैं, बहुत सारे roles होते हैं जिसमें आप easily एक disabled person को उस role में ले सकते हो, चाहे वो role specifically disabled इंसान के लिए नहीं लिखा गया है. But I think उससे लोगों की आंखें खोलेंगी, उससे लोग ये inclusivity ज़्यादा बढ़ेगा, उससे लोग realize करेंगे कि disability is just like something else. You know, सबके पास कोई differences हैं, it's just another difference, but it doesn't make the person lesser, it doesn't necessarily make the person more, it just makes the person like the rest of us. सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, and I feel like if I would have seen that growing up, it would have really helped me कि I wouldn't have felt outside. I wouldn't have felt कि मैं सबसे अलग हूँ. I wouldn't have felt so shy. Growing up, I was very, very shy. मैं नहीं बात करती थी स्कूल में. Even when I started working, मैं नहीं बात करती थी because I always felt different. But अगर मेरे पास कोई role models होते या मैं मीडिया में देख रही होती कि disabled लोग आम लोग हैं, you know, कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क है, कोई you know अलग अलग roles में उनको दिखाएं, just normal roles, I think that would open up you know, a lot of awareness, because there's so many things that disabled people can do जो हम सोचते ही नहीं हैं in media. Like I wanted to be a radio announcer शुरू में. I applied to All India Radio, but मुझे interview तक नहीं दिया because I actually couldn't have entered their building and their studio because it wasn't accessible. So they didn't even call me. You know, so it was like, you know, things like that need to change, because why can't a person in a wheelchair be a radio announcer? There's no reason, right? You know, it's been great that Big Boss pe aajkal we're seeing a little person, right? We're seeing Abdu. It's great to see that because he's being treated like everyone else. He's being treated normal. ये नहीं है कि सब लोग उसको बेचारा बेचारा कह रहे हैं या बहुत inspirational कह रहे हैं. He's just one of the people in the Big Boss house. तो ऐसी चीज़ें हमें और देखनी है मीडिया में, to be able to, I think it actually inspires us. Yeah, exactly, it inspires. और in fact आप मुझे हमारे next point पे अपने आप लेकर आ गए कि ये अक्सर देखा जाता है कि जब हम मीडिया में whenever we are watching a film or we are watching a show, then you know, either the person with a disability is an object of pity और या फिर उसको एक डिवाइन वो पावर दे दी जाती है कि वो बहुत स्पेशल है. अगर हम सच्ची में देखें कि कोई यू नो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर न्यूज़ एंकर है और जैसे वो आ रहे हैं, बाकी लोग स्टूडियो में आ रहे हैं और वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बनिस्बत किसी और चीज़ का कि भाई इट्स जस्ट देयर, इट्स लाइक देयर फॉर एवरीवन कि कोई भी ये कर सकता है. आशीष, मैं आपसे एक थोड़ा हट के सवाल पूछती हूँ. आप अगर अपनी लाइफ में देखें, इफ़ यू गो बैकवर्ड, तो आपका फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या होगा? कभी स्कूल में देखा या यू नो किस तरह से आपका जो एक थॉट प्रोसेस डिसेबिलिटी पे बना, तो वो कैसे बना, किस चीज़ से बना?
आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि हाँ द स्ट्रगल्स और द मुश्किलें जो PWDs को होती हैं, मेरे क्लास के अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लासमेट था एंड ही लॉस्ट हिज लेग. एंड पहली चीज़ जो हमें रियलाइज़ हुई कि इवन द बेंच that we were sitting on, that access bit, the accessibility bit, and also there is a lot of I mean there is not a lot of awareness ki how do we actually sensitively talk about the issues that these people face, right? And that brings to me that very interesting point that sir made on the representation bit, right, on the media and all of that. So a good template that this is a very positive trend जो हम देख रहे हैं on LGBT issues, right? There is a very good portrayal happening in the media and उससे थोड़ा perception change हो रहा है. ये template बन सकता है I think कि and second thing as Gallywood say कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, right? So rather than, and I do realize the irony here, rather than getting advocates speak on behalf of the PWDs, let them speak. हाँ, let them tell their issues. उनको आप बात करने दीजिए. I think ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. बिल्कुल. I'm sure Rakesh will add to it. ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि दूसरे लोग उनके बारे में बात नहीं करें, पर स्पेस बनाई जाए, अपनी बात कह सकें, कर सकें. राकेश. तो जो आपका जो ये सवाल था कि आपको ये दिव्यांजन के बारे में कहाँ से दिखा, मैं तो जब हाँ तो देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा फॉर्म हुआ सिनेमा से, और सिनेमा में उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हूँ लेकिन फिर भी जब मैंने सिनेमा जब पहली बार देखी थी तो कोई एक वो रोलर, लकड़ी का एक रोलर पे था और उसको आई थिंक कोई एक हीरो उसको टान रहा था एक रस्सी लगा के. तो क्योंकि वो दिव्यांजन थे, उनके दोनों पैर नहीं थे तो उनको टान रहे थे, तो वो बैड लाइट में दिखा. तो ये जो इंसान का साइकोलॉजी में बोलते हैं अफर्मेशन, जो बचपन से जो आप देखते हो वो देखते 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 एक दिमाग में एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है. तो ये बिलीफ सिस्टम इस तरह से, ये तो मेरा क्रिएट हुआ, ऐसे 140 करोड़ आबादी में कितनों का क्रिएट हुआ होगा. चलो मेरे टाइम पे उस टाइम 140 करोड़ नहीं तो 70 करोड़ या 80 करोड़ होंगे, उनका तो ये दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट किया होगा. अभी आशीष जी ने बताया LGBT के बारे में. LGBT का मैं डॉक्टर अक्कई पद्मशाली काफ़ी फेमस ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करा तो वो बोले कि उन्होंने बोला कि हमारे बारे में क्यों एक्ट बने, ट्रांसजेंडर एक्ट क्यों बने, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, दिव्यांजन के लिए क्यों राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बने, दूसरों के लिए क्यों ना बने. हम जो दूसरे हैं वो क्यों बोले कि हमको LGBT और PWD को इंक्लूड करना है. PWD या LGBT क्यों ये ना बोले कि हमको दूसरों को इंक्लूड करना है. तो ये माइंड शिफ्ट है, और ये ग्रेटली ये जो लोगों का माइंड फ्रेम बना है, माइंडसेट बना है, ये हम मीडिया में देख के ही बने हैं. हमने मूवीज़ में देखी है, हमने मूवीज़ में देखे हैं कि ट्रांसजेंडर्स किस तरह से रास्ते में दे आर बेगर्स, बट उनको कई ग्रेट लाइट में दिखाया नहीं गया. तो वो जो, और वो एक पार्ट हो गया. जो दूसरा पार्ट है आज के तारीख में जो इतना पावरफुल सोशल मीडिया है, और जिस तरह से गीत जी बता रही थी कि नहीं, आई थिंक गुंजन जी बता रही थी कि उनके स्ट्रगल्स को किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है, जैसे दूसरों के स्ट्रगल्स हाईलाइट करके, और वो स्ट्रगल से कैसे ओवरकम किए हैं, यही एक बहुत बड़ा स्टोरी है. तो स्टोरी टेलिंग का ज़माना है, और स्टोरी टेलिंग ही बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में पेडागोजी आ गई है जहाँ पे स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसी चीज़ की हम बात करते हैं. तो इसको हम किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में, सेंसिटाइजेशन में, अवेयरनेस में, सोशल मीडिया में, कहीं भी आपस में बातचीत करते हुए, कंपनीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तब जाके ये इवोल्यूशनरी चेंज होगा. बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट अ रेडिकल चेंज, इट कैनॉट बी अ रिवॉल्यूशनरी चेंज. ये कोई 10x का कॉन्सेप्ट नहीं है. आए हैं तो अगर न्यूज़ रूम में और लोग हों अपने, तो अपने आप से एक सोच बदलेगी,
क्योंकि राकेश ने कहा कि वो बुज़ुर्ग नहीं है, मैं बुज़ुर्ग हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि छुटपन में ऐसी बहुत सी फिल्में होती थी जिसमें अमेजिंगली जो हंसी आती थी, जो ह्यूमर होता था, वो किसी के स्टैमरिंग से होता था या किसी की एक आंख फड़क रही, दैट वाज सपोज्ड टू बी सो फनी। तो हम वहाँ से तो काफ़ी आगे आ गए हैं, थैंकफुली, फॉर्चुनेटली, बट उसको एक और रियल वो देने के लिए कि अगर हम अपनी काम की जगहों में और लोग देखें तो हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा। Certainly, and I think we need to also have it across professions. I feel universities, government departments, जहाँ पे reservation अभी है for people with disability, वहाँ पे we still see certain change because we see those people. But in professions like ours, I have not seen a disabled person or a wheelchair bound person or somebody walking with crutches or somebody blind working for us. Like, we are the biggest news agency in the country, but I think across India we do not have somebody who suffers from some disability and is a reporter with us. So, and I always feel that, if we have some representation, we will also have more coverage about those particular issues. No? Why we see that women and child development, if we talk about, that beat is like, if you talk about newsrooms, उसे हमेशा कोई महिला ही कवर करती होगी, उसे कोई हमेशा women ही कवर करती होंगे. It is not about biases, but I think they strongly feel about those issues. So अगर हमारे पास न्यूज़ रूम्स में हमारे चाहे वो TV channels हैं या whatever media and even cinema, whatever we talk about, I think we have somebody from the same community, somebody who also comes from there, will not only inspire, and as Geet pointed out, that it will become normal, that 10 people are coming to this auditorium and somebody can also come, so let them feel normal, and that kind of representation, I think, will make that difference. And I think, the fact that what Geet said, that she wanted to be at AIR, but there was no access. I mean, she could not enter the building. So once you have people there, then they will have to make the access. आपकी जो buildings होंगी वहाँ ramps होने ही पड़ेंगे, वहाँ accessibility होनी ही पड़ेगी. और I think also अब जो इतने नए changes आ गए हैं, online education से, training से, skills जो दिए जा सकते हैं, उससे हमारे काफ़ी बच्चे और यंग एडल्ट्स तैयार हो सकते हैं इन जॉब्स के लिए, और वो ये काम अच्छे से कर सकते हैं. गीत, व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव आई मीन यू आर सो हाईली एजुकेटेड, so many degrees, so would you like to talk about that? My workforce experience was all in the US. India में मैंने social media and also just going into the slums ऐसी चीज़ें करी हैं, but जब मैं US में थी, I was probably the only person with a disability working in the jobs that I was working in, but definitely उससे openings आ रही थी, like they would figure out कि okay, इसको accessible कैसे बनाएं. We have to make sure कि एक restroom है तो एक accessible restroom भी है, because I was working for a judge एक time पे, I was working in the Boeing company एक time पे. So I think having me there did make a difference, because it raised awareness. Okay, we need to make things accessible, and it also just helped, like I said again, letting people realize that people with disabilities are capable. That they're not just, because disability है तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. It just means कि वो एक चीज़ नहीं कर सकते हैं जिस भी reason से they're disabled, but there's so many other things वो कर सकते हैं. So I think that was really important, was having people, like you said, being in the workplace, and I think it was good for representation, because when things came up, then I was able to say, hey, what about the disabled angle? Or right now I've been working a lot with YouTube, and YouTube has been giving me wonderful opportunities to travel and to speak on their behalf at different meetings, and it's been good because a lot of times they have to be aware of how to make the stage accessible, how to make each place that I'm going, how to make transportation to and from a place accessible, and it's been great to partner with them
and seeing how they're trying to expand it, because it all started actually उन्होंने एक video बनाना था because they were trying to make videos on inclusivity. So they said, can you make a video, help us make a video on disabled inclusivity? And while I was making the video, I said, one thing you have to do is if you want people to accept people with disabilities and you want inclusivity, actually, you need to highlight people with disabilities, put them in places where people can see them. अगर कोई हमें कभी देखेगा ही नहीं तो अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा? अगर कोई हमें कभी देखेगा ही नहीं तो एक्सेसिबिलिटी कैसे बनेगी? अगर हम कभी मूवी थिएटर में जाएंगे ही नहीं, मूवी थिएटर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहीं ना कहीं एक चेयर रिमूव करनी पड़ेगी कि व्हील चेयर वहाँ आ सकती है, आपको कहीं ना कहीं रैम्प बनाना पड़ेगा कि मैं कहीं जा सकती हूँ. बिकॉज आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ प्लेसेज आई बीन, लाइक आई गो टू अ मॉल. आई रिमेंबर नोएडा में शुरू जब मॉल्स बन रहे थे तो वी वेंट टू अ मॉल एंड दे सेड हाँ सब एक्सेसिबल है. लिफ्ट थी बट लिफ्ट से पहले 5 सीढ़ियाँ थी. एंड सो इट वाज बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग देयर स्लोली दे एक्चुअली बिल्ट अ रैम्प बिकॉज दे वर लाइक ओके लोग आ रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेसिबल. So I think as we start working in the workplace, the accessibility will come, the awareness will come because we're visible. जब तक हम छुप के बैठेंगे, जब तक हम खुद नहीं जाएंगे opportunities के लिए और लोग हमें opportunities देंगे नहीं, तब तक कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ बातें ही होंगी. ये एक बहुत ज़रूरी और अहम बात है क्योंकि ख़ासतौर पे हम मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और हम सभी मीडिया से हैं, पर आई थिंक हम एक चीज़ पे सभी गिल्टी हैं. आप देखेंगे अक्सर जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स बनती हैं उसमें बहुत खुशी से वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो जो फला ईयरिंग था ना, या वो जो ऐसे वाले बाल थे, या वो जो कुर्ता पहना था, ये ट्रेंड हमारी फिल्म ने, ये फला एक्टर ने किया था. पर जब हम कभी भी बात करते हैं कि हम सोशल चेंज के लिए आपने ये इतनी रिग्रेसिव चीज़ क्यों दिखाई, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात करें, ये हमारा काम नहीं है. इमीडिएटली हमें ये आंसर मीडिया से मिल जाता है. तो आशीष, आपको क्या लगता है कि इसमें रोड ब्लॉक्स क्या हैं जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन, जो जिस तरह की हम चाहते हैं कि ना वो सुपर हीरो दिखाए जाएं, ना वो बेचारे हों, पर नॉर्मल लोगों की तरह प्रेजेंट किए जाए मीडिया में, इसमें रोड ब्लॉक्स क्या हैं, क्यों नहीं हो रहा ऐसा? I think what Geet said, there is a lot of invisibilization. The problem is कि हम फील कैसे करेंगे अगर हम देख ही नहीं रहे हैं किसी के बारे में, तो वो सबसे बड़ा इशू अभी के लिए है. आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड वो इशू है. हमें अगेन वो जो स्टोरीज हम देखते हैं कि या तो सुपर हीरो हैं या एकदम बेचारे हैं. देयर आर द स्टोरीज ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल लाइक गीत, who have come across, उन्होंने struggles देखे हैं, she has come over those struggles and living a very normal life, despite the impediments. But ये stories visible होनी चाहिए, वो चीज़ें हमें बाकी लोगों को भी पता चलनी चाहिए. and जहाँ पे जो issues उन्होंने एक day to day basis पे फेस किए हैं, वो चीज़ें हमें भी पता होनी चाहिए, वो चीज़ें पोर्ट्रे होनी चाहिए मीडिया में प्रॉपरली. एक अभी 2-3 दिन पहले ऑन द एक्सेसिबिलिटी बिट, एंड कितना हमारे अंदर हमें चीज़ें पता नहीं है कि सो 2-3 दिन पहले आई थिंक शशि थरूर हैड सम फुट इंजरी एंड ही ट्वीटेड दैट पार्लियामेंट में सिर्फ एक एंट्री गेट है जहाँ पे रैम्प एक्सेस है. ये अब तक किसी को नहीं पता था. जब एक आई मीन इट वॉज अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड टू शशि थरूर, बट ये इशू आने के लिए ये होना ज़रूरी नहीं था शशि थरूर के साथ ही. ये चीज़ें बहुत सारे लोग जाते होंगे पार्लियामेंट में हु हैव डिफ़िकल्टी, हु हैव हाँ कैसे जाते होंगे, ये आज तक किसी को नहीं पता चला. वो शशि थरूर के पैर में मोच आने के बाद ही पता चला. तो हाँ उसके भी मजाक बनाए गए. एग्जैक्टली हाँ. तो ये चीज़ें आई थिंक वही इनविजिबलाइजेशन इतना है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो समझेंगे कैसे. राकेश, आपको क्या लगता है ये रोड ब्लॉक्स क्यों हैं? एक चीज़ पे मैं जो विच आई स्पोक अबाउट अर्लियर वाज टू डू विद द माइंडसेट.
एंड माइंडसेट जैसे मैंने बताया, जो बहुत सारे माध्यम से हमारे ये माइंडसेट क्रिएट होता है और बचपन से हम जो देखते आते हैं उसी वही हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है। अब मुझे पता नहीं है कहाँ पे था, पर मैंने एक वो सुना था, क्या बोलते हैं, कोट सुना था, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन इज कि उसके बाद इतने टॉयलेट्स हुए इंडिया में कि वो शौच का इशू और शौच का समस्या ग्रेट एक्सटेंट तक वो ख़त्म हो गया। तो सोच था, सोच के बदौलत हुआ। मुझे ये अभी भी याद है, एक सुलभ शौचालय बोल के एक संस्था आया था, उन्होंने पूरा का पूरा एक ये डायनामिक्स चेंज कर दिया। मूवीज़ आई टॉयलेट, अक्षय कुमार जी का, उसके बाद देखिए आप पूरा लोगों में वो जागरूकता फैली। तो आई थिंक ये सोच है, आई थिंक इट्स द माइंड सेट, एंड हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट दिस माइंड, एंड ये माइंड सेट चेंज अगर हम आज के ज़माने में देखें तो एक्चुअली उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज चाहिए। इवोल्यूशनरी से फिर वो ज़मानत निकल जाएगा, और जब तक कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट ना क्रिएट हो जो सबके लिए आइदर एक मैंडेट बन जाए, मैंडेट है 2016 एक्ट में, बट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट वो सिर्फ मैंडेट है, उसका एनफोर्समेंट, उसकी सोच, उसकी माइंडसेट, लोगों में वो फीलिंग, उसका एसोसिएशन, उसके प्रति वो भावना, वो कैसे लेकर आए, और वो लेके आने के लिए हम सब का एक योगदान बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ, जैसे आई थिंक गीत ने बोला, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली कि हमको भी हमारे राइट्स के लिए आगे बढ़नी पड़ेगी, हमको भी आगे जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। अगर उनको AIR में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो आज उन्होंने कुछ और किया। तो उसी तरीके से हर इंसान को वो स्टेप आगे लेना पड़ेगा, अपने आप को ना कि पिछड़ा हुआ सोच के, बट ये सोच के कि मैं भी हर इंसान की तरह, जैसे डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ये सोच लेकर आने से आई थिंक इवोल्यूशन faster hoga than later. I think the fact that yes, we need to have the awareness that yes, I have the right, and interestingly, in this respect, there are already rights. There are already legal rights. So what we need to do, I think, when we talk about representation in the media, is to sensitize people with disability that the rights are there. So if the newsroom is not showing your story, then you have to make your own story and you have to reach out to people. And today you have the ability and the access to technology to be able to do it. Perhaps where we are lacking is, we are lacking in the self-confidence to be able to do that yes, our stories are interesting or our stories are important. And there is where I would like to bring, Gunjan, I would like to bring you in, that how can we begin and where do we take these baby steps in the media to make the representation fair? So I feel, as you rightly pointed out and as Rakesh pointed out, it's a two-way street. So we are talking a lot about what professional organizations should do, what the society should do, what the media should do, but I think, we also need one step from people from the particular category and people who are suffering with disabilities, that, you apply, you bombard them with your resumes, you bombard them with your applications and apply everywhere. Today, in this world of social media overdose, I would say, corporates, big organizations, everybody is brand conscious. Nobody would not want to hire you by saying that, okay, my building is not accessible for you, and that is why I cannot hire, or your profile or your particular disability is kind of a hindrance to the kind of profile that we are offering, and you will not be able to do this, so we are not doing this. Since all considering big organizations are going to be itna brand conscious, so it's possible that you are likely to land up there, but that beginning has to come from you. As I mentioned that we, in our organization, we do not have anybody, but that can also be an angle to it, that we never received any application from someone. So I think सबकी तरफ से ये ज़रूरी है कि rather than thinking कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, या ये तो मुझे लेंगे ही नहीं, या considering I should think of some other job, or I should, barring professions, all professions everywhere, I think people should come out on their own and let's take their chance and let it click particularly.
पहल दोनों तरफ से होनी है और वो ज़रूरी है. I believe कि I mean I like to say this often that films cannot change the world and they do not change the world, but what they do is they create an environment which is conducive for change. आप behavior change communication की जो हम बात करते हैं, so I think गीत I would like to ask you upfront कि आप YouTube पे हैं, आपने फिल्में बनाई हैं, आपको क्या फीडबैक मिला? वो फिल्म देख के लोगों का क्या फीडबैक मिला आपको? Across categories. I think, well, you know, I have received really positive feedback. बहुत सारे लोग, you know, unfortunately they don't believe that I'm actually in a wheelchair. वो issue हो जाता है कि लोगों को लगता है कि मैं acting कर रही हूँ wheelchair में होने की, because wheelchair वाला इंसान थोड़ी नहीं ऐसे करेगा. Because the problem is कि cinema में, in mainstream cinema, whenever you show a deaf person, a blind person, a wheelchair bound person, it's always fake, right? Zero mein, it was Anushka Sharma, it was Shah Rukh Khan playing people with disabilities. It was never actually a disabled person playing that character. And so that's been a struggle that I've had, where people are like, think that it's fake. I've actually received a really positive feedback, because actually जब मैंने शुरू करा था, my whole thing was कि मैं बचपन में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, but फिर एक्सीडेंट हो गया, मैं करती रही. But when I was in 12th standard, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि एक लड़की जो व्हीलचेयर में है, कोई भी उसे स्टेज पे, कोई भी उसे स्क्रीन पे देखना पसंद नहीं करेगा, आप बैक स्टेज करो, आप डायरेक्शन करो, आप राइटिंग करो, आप कुछ ऐसा करो. एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली बिलीव दैट. तो मैंने काफ़ी सालों तक एक्टिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था. देन इंडियाज़ बेस्ट सिने स्टार्स की खोज एक रियलिटी शो आया, एंड आई डिसाइडेड टू ट्राई जस्ट ऑन अ विम के बस मज़ा आएगा, बस ऑडिशन के लिए जाएंगे, कुछ होगा नहीं. But as I went there, I started clearing round after round, और मुझे top 75 in the nation TV पे भी आई थी सब कुछ. And then my dream was like rekindled. And then I actually started my Facebook page इसी सोच के साथ कि देखते हैं कि audience क्या कहेगी. So I started saying कि I want to be India's first wheelchair actress, क्या आप मुझे support करोगे? And the response was phenomenal. Within 6 months, मेरे पास 1.5 million followers थे on Facebook, और अभी मैंने कुछ एक्टिंग का डाला ही नहीं था. You know, and then after about a year I realized कि अब okay मैं कह रही हूँ, but मुझे कुछ दिखाना भी पड़ेगा, मुझे कुछ करना भी पड़ेगा. And I started making short films, and the response has been very positive. It's been very positive कि people are accepting. People are, you know, they want to be made aware, they want to know, but काफ़ी बार कोई उनको बता ही नहीं रहा है, कोई उनको awareness दे ही नहीं रहा है. So that's been, you know, that's been my thing, where a lot of what I do, I don't emphasize my disability. My movies are not mostly about disability. They're about normal things. You know, domestic violence के बारे में है, स्वच्छ भारत के बारे में, but I'm just in a wheelchair. So I'm that normal person in a wheelchair, living a normal life, doing normal things, but wheelchair में हूँ, disabled हूँ. But to try to help people realize, and I think it's really helped just in general. Like अभी आने से पहले यहाँ पर I was at Select City Walk Mall, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने photos वगैरह साथ में खिंचवाई. You know, आप वो YouTube पे होना, that वो क्या किया, and not one person commented or was like, you know, like, oh that's strange, yeah, you know. कभी-कभी कोई पूछ लेगा, oh आप wheelchair में, मुझे तो पता ही नहीं चला. You know, I'm like, I'm a little bit surprised, but I'm like, okay, I don't know. You know, because मेरे wheelchair, काफ़ी videos में नहीं भी दिखता है wheelchair, because I'm just talking, but काफ़ी videos में दिखता भी है, I dance in my wheelchair. But the good thing is that people are not taken aback. It's becoming normal, I think. I feel like, at least for me, people are starting to accept me as I am. But yes, it's still difficult media mein, because like there was a movie that I was going to do, sab kuch almost lined up tha, like, because I really want to break out into the mainstream, right? But then last minute they were like, okay, you can't walk at all, right? And I was like, nahin. They said, oh, hamara to shoot 2nd floor pe hai. Bas khatam. You know, so that was difficult. But just one thing to add on to jo Gunjan ji aap keh rahe the, you know, कि people with disabilities should apply for jobs. That's right. But I think the problem is कि हम apply करते भी हैं ना, काफ़ी बार हमारा application वो round वाला filing cabinet होता है ना, dustbin, उसमें चला जाता है, because people know that their place is not accessible. But I think, and that makes us scared to apply again. You know, like you're saying, bombard. We want to, but it makes us scared. But if organizations actually want people with disabilities they want to help, आप एक internship रखो only for people with disabilities.
कि हम वर्क प्लेस में आएँ तो आप एक you know summer job रखो only for people with disabilities. आप actually वो openings करो, ठीक है, you know, people want to be accepted normally, want to apply the normal route, but काफ़ी बार एक तो वो fear है, दूसरा जो देख रहा होता है ना application, not everyone is sensitive, unfortunately. तो अगर आप एक opportunity खोलोगे तो एक तो जने ऐसे आएंगे, उसके बाद वैसे भी आने लगेंगे. So sometimes it's like what I've seen with YouTube. Like I told them कि आप कह रहे हो कि आप help करना चाहते हो, but then you have to highlight the disabled creators. You actually have to give them opportunities कि हम भी नज़र आए लोगों को. And they actually did it. They took the challenge and फिर वो मौके देने लगे. I mean, to me and to other creators as well. So I think that is something that media needs to do, is they need to take that step, because sometimes, yeah, there's fear. There's fear because we've been rejected so many times कि एक और rejection नहीं ले पाएंगे. And there's also, am I good enough? But if it's an internship में थोड़ी training भी मिलती है. तो even if I'm not good enough, आप मुझे थोड़ी बहुत training भी दोगे, which would really, really help. ग्रेट आइडिया आई थिंक गीत. और जो मुझे समझ आ रहा है कि एक बड़ी चिकन और एग वाली सिचुएशन हो रही है कि अगर एक्सेस नहीं होगा तो सारी बात ही ख़त्म हो जाएगी. कि अगर ठीक है आपकी सोच भी अगर अलग है पर फिज़िकल एक्सेस नहीं है तो कैसे कोई जाएगा. पर ये जो गीत ने बात कही अबाउट इंटर्नशिप, आई थिंक दैट्स वेरी गुड, बिकॉज बहुत सी जगहों पे अगर उनको पे नहीं करना पड़ेगा और वो ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो मुझे लगता है वो काफ़ी ओपन होंगे इस चीज़ के लिए. पर coming back to again media and representation, अगर हम सोचे आशीष कि हमारी if I told you what is your best what best case scenario, that if you would like to see a movie or an OTT show showing PWD, how would you want to see that person? Again, not in the role of superhero nahi chahiye or na bechara. Again, normal thing. I mean, I did not know about Geet's YouTube channel, but I'm very much inclined to watch it now. I mean, again, as she said, talking about normal things, different issues, just that she's in a wheelchair. So I know कि हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा, ये देख के अच्छा लगेगा. She is not, again, वो she has that that self-worth, and again she's not defined by one thing. So that kind of show, that kind of representation across the media, that I would like to see. I think I spoke about my thoughts. It should be like a movie, like a mother ball, the rugby team of US and Canada. That's how I see. I mean, why should there be talk about PWD, LGBT? Why can't we just look at people from the people lens? But having to talk about what Geet was saying, I'm just going back a bit, digressing from the question that you asked, because I think I've answered that in short time. So earlier, when you spoke about diversity, the concept or the talk was only diversity and inclusion. Now people are talking about diversity, equity and inclusion. So when you talk about equity, it's about different strokes for different folks. Like for example, many organizations are right now looking at the accessibility angle. Because if you don't provide the right tool to the person, how will they perform? Most of the studies across the globe have revealed that the priority is to give accessibility, and this is not just about people with disability, but it's to do with anybody and everyone else. And that's the reason why so many applications, so many apps have become so predominant, because those are the ones that are giving accessibility for people to enhance their skills, to enhance their potential. Each one of us have their own potentials, but how do we enhance that? It is the tool. So D&I is right now moved to diversity, equity and inclusion, which equity was not there earlier. And I think this equity has come after a lot of this enforcement of many of the acts that were there, many of the sensitization programs that worldwide it is happening. And like as I said, jahan soch hai, wahan shauchal hai, I think the positive side it is that nowadays persons with disability are getting encompassed into the mainstream, and organizations are also
looking at it from that standpoint. And I think the last bit is that people with disability should come in. दिव्यांजन को खुद आना चाहिए और अपना जो आत्मनिर्भर सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कि हम भी सबकी तरह है, ये लास्ट माइल अगर हो जाएगा तो फिर इन सारी फिर इस तरह का कॉन्फ्रेंसेस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. I think I'll reinforce the same point as, I mean, I totally agree what Geet pointed out, ki you have been rejected so many times that it is so difficult to take the rejection. But the road is tough and definitely the walk is going to be tougher. It's like, aapko pata hai ki, you know, it is going to take that kind of effort. So 3 decades back, like it wasn't as acceptable and it wasn't as popular and it wasn't as, I would say, you know, common to see so many women working like we have today. I mean, nobody, you know, battles an eyelid when we see that women in workplace because it is so common. But hats off to those women, you know, 3-4 decades back who kind of stood their ground and came out. And so the road was tougher for them, which made road easier for so many of us. I think if we do it for a decade, for 2 decades, if people with disability today start doing it, maybe in a decade's time, we will see that it has become so common. Like today, nobody will deny you an opportunity just because you are a woman. So 10 years later, we will see a place where nobody will deny you a space, safe space, you know, an opportunity just because you are a person with disability. It will need like an extra push, but I think that is what we need today. Yeah, it's going to need lots of Geets. Yes, Rakesh, please. Actually, it will need lots of Geets like what she did. I just wanted to add something. You know, when I was in London, तब वहाँ पे मैंने देखा कि व्हीलचेयर वाले लोग के लिए वो हर जगह से एक्सेसिबिलिटी है. वो कहीं से भी आप निकल जाइए, आप फुटपाथ पे चढ़ सकते हैं, बस अपने आप ऐसे नीचे झुक जाएगा, एक कुछ निकल जाएगा, उसके ऊपर आप चढ़ जाएंगे. तो इस तरह की चीज़ें अभी आप देखेंगे तो एयरपोर्ट के बसेस में चालू हो चुका है. एयरपोर्ट के बसेस में एक्सेसिबिलिटी आ चुका है ताकि लोगों को चढ़ाने में उतारने में सुविधा ना हो. एयरक्राफ्ट में चढ़ने के लिए इस तरह से रैंप है ताकि सीढ़ी नहीं है, किसी को तकलीफ ना हो. सेफ्टी पे एम्फेसिस दिया जा रहा है. तो आई थिंक आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस पॉइंट आउट. I mean, we need just people out there being different. I mean, being themselves, right? All of us have a different calling in life, and jo bhi aapka calling hai, you have to go out there and just make it happen. I mean, that's what I had to do, right? Because मुझे कोई रोल नहीं दे रहा था. I was hoping कि कहीं आसमान से टपक के आ जाएगा मेरी गोद में रोल कोई नहीं दे रहा था, तो मैंने अपने लिए रोल्स बनाए. And that's the thing with media right now. मीडिया हमारे हाथों में है. जैसे आपने कहा, मीडिया हमारे हाथों में है, so we actually can make that representation now. We can develop that place right now because आपके पास इतनी सारे social media platforms हैं. And अगर हम खुद अपना कैमरा लेके अपने आप को शूट करने लग जाएंगे, जो भी हमारा सपना है हम उसे जी सकते हैं. आपने डांसर बनना है, आपने सिंगर बनना है, आपने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर बनना है, आपने जो भी करना है आप खुद कर सकते हैं. शुरुआत तो कर ही सकते हैं, अपने लिए वो दरवाज़ा खोल ही सकते हैं. And then hopefully धीरे धीरे you know, like we said, society will start accepting, just like women ne kiya, or women are accepted. In the same way, I mean, if I just even look over the past 10 years, even disabled sector mein bahut changes aaye hain, bahut difference aaya hai. So, I mean, I think we're on the right road. It's just still a struggle, and you know, it's slow going, but hopefully, agar hum milke karenge, we can make it faster, especially because, like we were all saying, the media is in our hands now. I mean, I think one of the most powerful media, yes, television is powerful, cinema is powerful, but social media is phenomenally powerful. And wo cheez agar people with disabilities realize that, because wo aap apne ghar baithe bhi bana sakte ho, aapke paas finances nahi hai, tab bhi aap bana sakte ho. And जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. And I'm starting to see that even, you know, like आप अभी टोनी कक्कर ने एक dancer का video डाला था, and both his legs are amputated, and he's a dancer. And I mean, he was on Tony Kakkar के Instagram page, so I mean, he's got a 8.4 million audience. तो you know, अगर हम करेंगे तो वो दरवाजे हमारे लिए खोलेंगे.
But again, yes, we do have to take the step. Hopefully, log हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे, हमें वो opportunity साथ में देंगे. But ultimately, everyone has to make their own path, right? और आई थिंक अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया का ही वेट करते रहेंगे तो बहुत सी सुंदर कहानियाँ जो हैं वो खो जाएंगी, स्ट्रगल की, सक्सेस की. मैं एक बार एक जगह शूट कर रही थी एंड जैसे होता है कि इन्होंने कहा इनको वो फिल्म जो है सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा. मुझे एक छोटी सी कहानी एक गांव की औरत ने जो सुनाई, मुझे उसने बहुत इंस्पायर करा और इतने साल के बाद भी वो कहानी मेरे साथ है. एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात होती है ना, जैसे औरतें बैठी तो अच्छा शादी, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो कहने लगी मेरे 2 बेटे हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है जो पहले पैदा हुआ था वो जो मुझे समझ आया कि वो ऑटिस्टिक है और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उनके हस्बैंड को लगा कि हम इस ऑटिस्टिक बच्चे को कैसे पालेंगे. दूसरा बच्चा तो है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक शायद कोई आश्रम या एनजीओ था, वहाँ पर उसको दे आए. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं देकर आऊँगी. और फिर वो उस लेडी के पास गई तो उन्होंने उसको हेल्प किया. कहानी लंबी है, छोटी करने के लिए वो बच्चे ने 3 स्पेशल ओलंपिक्स पे गोल्ड मेडल्स जीते और उसको येस बैंक के अंदर नौकरी मिली. और जो दूसरा बेटा था शायद वो पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं था और वो उतना कुछ नहीं कर पाया. तो वो जो माँ थी उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं उसको वहाँ पे छोड़ आती, कोई ऐसा स्टेप ले लेती तो आज मैं इसका ये सक्सेस नहीं देती. और उन्होंने मुझे बहुत नॉर्मल तरीके से कहानी बताई कि जैसे हम मसूर की दाल हर मंगलवार बनाते हैं या पुदीने की चटनी में 2 हरी मिर्ची डालते, कोई उसमें ड्रामा नहीं था, कोई उसके अंदर बहुत इमोशन नहीं था. इट वॉज अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट नैरेटिव एंड इट हैज़ ऑलवेज स्टेड विद मी. सो येस, इन अ लॉट ऑफ वेज देयर इज़ डिविनिटी, देयर इज़ destiny, but there is also what representation we want. Today we are at those crossroads in society, in life, at technology and intersections where we can tell our own stories, which I think is very, very different. ये जो 10 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, आज हमारे सबके पास ये पावर है कि हम ये अपनी कहानियाँ खुद लोगों तक पहुँचाएं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा. क्योंकि जब हम दिखेंगे, हम सुनेंगे, हम अपना व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करेंगे तो बहुत सा बदलाव आना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, वो होना ही पड़ेगा. एक्सेस आना ही पड़ेगा, लोगों का माइंडसेट चेंज होना ही पड़ेगा. जैसे गुंजन ने कहा अबाउट विमेन, आशीष ने कहा अबाउट LGBT. तो ऐसे बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो आज उतने मार्जिनलाइज नहीं हैं, मेन स्ट्रीम भी नहीं है पर मार्जिनलाइज भी नहीं है. और ये मेन स्ट्रीम होता क्या है आखिर? ये कौन डिसाइड करता है कि कौन मार्जिनलाइज्ड है और कौन मेन स्ट्रीम है? सो हमें जैसे पहले कहा जाता था कि अपनी सड़क खुद बनानी है, अपनी राह खुद तय करनी है, आज हमें अपनी कहानियाँ खुद बनानी है और अपने आप खुद उनको बताना है और लोगों तक पहुँचाना है. आई थिंक एनी लास्ट कमेंट्स और डू यू थिंक वी कैन रैप अप? Just one point that I wanted to make was, when we are talking about social media and our phones as a powerful medium, I think not just for telling our stories, I think it's time that all of us, and including people with disabilities, also start doing this. As Geet pointed out, you are going to a building, you're going to a mall, you see there is no ramp, please click a picture and put it on social media. You find something wrong happening to somebody being denied opportunity, you were at a crossing, a blind person was walking with a cane and a car didn't stop, please click a picture and put it on social media. As she said, that it is phenomenally powerful and things reach places and we see, action, and we see calls for change because of what has been going viral on social media. So it's time that we utilize that medium constructively, not just to tell our stories, but also highlight the problems in our system as well as, the problems everywhere. Inspire bystanders to intervene in a constructive and positive manner. I just wanted to add, if you get an opportunity or if you have seen it, so good enough. If you haven't, just see a series in Netflix called Good Doctor.
it's an exceptionally well-made series, and I saw in that Good Doctor how an autistic person can become the best surgeon in the world. So it's a beautiful story, and I think it brings out that element, you know, like I spoke about the movie called Mudderball, that it's talking about कि उनके जो capabilities क्या है. So just the last thought. I'm so glad we're all, kind of this whole panel is culminating on a very positive note and a very normal note. I have received 2 reminders, तो मैं अभी बता देती हूँ कि अभी एक advocacy report release होगी, तो आप लोग सब please ये video देखें. Thank you so much for being here. Thank you everyone for being here. Thank you so much, Aradhana ji, for this wonderful session. It's our privilege to have you all with us here. I would request our advisory board member, Sandeep Bhargava sir, to please join us on the dais and extend our token of appreciation and our regards to all our panelists. Thank you for calling us. It's a pleasure, ma'am. Thank you everyone. I'd request all the panelists to please come to the front for a group picture.
Thank you, Rakesh ji. Thank you, Gunjan ji. Thank you, Geet ji, for coming. Ashish ji, please stay in the front for a group picture.